This conference will now be recorded. In case of firewall, we created a one VNet. Under the VNet, we established a two different subnet, जिसमें से एक आपका VM subnet के नाम से, correct? And second one is related to the firewall subnet. And Yes. you must need to use the same name, क्योंकि अगर आप firewall subnet create करते हैं ना, कोई भी दूसरा नाम अगर मेंशन करते हैं सबनेट के अंदर, तो it will reject you while creating the firewall. दो जो firewall name है वो basically है Azure firewall subnet, including case sensitive. मीन्स जिस फॉर्मेट में ये लिखा है ना, उसी फॉर्मेट में हमें मेंशन करना पड़ेगा फायरवॉल के सबनेट के लिए. So we have already discussed about the VNet and subnets. So for example, we have one IP address space 192.168.1.0/25. इसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, लाइक एज 192.168.1.0/26. इट विल गिव अस अप टू 64 आईपी एड्रेस, और फायरवॉल के लिए भी हमने इतना ही आईपी एड्रेस एडजस्ट कर लिया, 192.168.1.64/26. Is it okay? Yeah. The VM subnet it's not applicable for the virtual machine. आप इसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. आपने VM क्रिएट किया, आपने डेटाबेस क्रिएट किया, आपने स्टोरेज लगाना है, कोई सी भी सर्विस एज्योर की आप इसमें स्टैब्लिश कर सकते हैं. सेकंड जो ऑप्शन है विच इज अप्लीकेबल फॉर फायरवॉल. अब आप इसमें एज्योर फायरवॉल स्टैब्लिश करेंगे. Right? Under the Azure firewalls, we have a n number of rules. The rules are responsible to manage the security. जिसमें से DNAT rule, which is help us to divert the traffic for inbound and outbound. उसके बाद application rule, and we have a network rule. अगर हम इनके सेटअप की बात करें, मीन्स कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो सबका एक ही प्रोसीजर रहेगा, एक ही तरीके से ये स्टैब्लिश होंगे, बट तीनों का टास्क अलग होगा. डीनेट रूल काम करता है हमारे इनबाउंड और आउटबाउंड पे. ठीक है, you can say that it work over a NSG network security group. एप्लीकेशन रूल्स की बात करें तो एप्लीकेशन रूल कैन हेल्प अस टू मैनेज द एक्टिविटी यूजिंग वेब सर्विसेज. अगर आपको कोई वेबसाइट अलाउ करनी है या डिनाई करनी है तो एप्लीकेशन रूल को कनेक्ट करेंगे. और नेटवर्क रूल होता है बेसिकली वीएम सर्विसेज के लिए. वीएम सर्विसेज इन द सेंस कि डीएनएस हो गया या फिर डीएचसीपी सर्विस हो गई, इनको अलाउ या डिनाई करने के लिए. क्लियर? Yes. फायरवॉल के अंदर जो भी सर्विसेज है, यू कैन जस्ट चेक इट, एंड आप एक बार ट्राई करना, फिर उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इफ यू हैव एनी इश्यूज. Yeah, I'll try for that. Cool. According to the content, we almost completed all the topics related to the uh, networking, जिसमें से हमने स्टार्टिंग की थी. We started from the very basic, like what is network component, IP एड्रेस वगैरह जिसमें देखा था हमने. Then we discussed about the VNet, जो पहला टॉपिक था, क्योंकि सभी सर्विसेज VNet से जुड़ी हुई हैं इसमें. VNet पेयरिंग, NSG नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, लोड बैलेंसर, बेस्टियन, बीपीएन कम्युनिकेशन एंड फायरवॉल, ये सभी टॉपिक्स हमारे नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं. और आई होप कि इसमें से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव Yeah. एनी क्वेश्चन लेट मी नो. Awesome. Yeah. सो कैन वी मूव फॉर नेक्स्ट टॉपिक. Yes. लास्ट मॉड्यूल है एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड, विच इज
The last module of Azure Administrator is Azure Monitor and Maintain Resources. ठीक है? Yeah. As per the name suggest, अगर हम बात करें Azure Monitor और Maintenance की, तो इसमें हम बेसिकली कोर एजेंडा हम लोगों का क्या है इसमें देखने का, वी विल डिस्कस अबाउट, एक तो बैकअप देखेंगे, एक रेप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है, बैकअप, रेप्लिकेशन, डिजास्टर रिकवरी, मॉनिटर और थोड़ा सा इनसाइट्स। ये सभी टॉपिक्स है जिसमें से हम टोटल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट, लाइक द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज बैकअप, सेकेंड इज रेप्लिकेशन, बैकअप भी कई तरीके से हैं, एंड विल डिस्कस अबाउट डीआर जिसको हम डिजास्टर रिकवरी बोलते हैं, विल टॉक अबाउट मॉनिटर एंड लॉग्स डिटेल। ये सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। फाइनल मॉड्यूल है अपने पास एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का। सो I hope you have a much idea about the gap between backup and replication. Sorry? Difference between backup and replication. Backup is, I mean, to take the backup of your data, and Mhm. replication is what making a copy of that. Which one is better? For the live data, is replication is good because that's given a instance, every instance of the backup, I mean, database for your application. Okay. What about DR? Data recovery Disaster recovery. or disaster. So ठीक है, लाइक एज रेप्लिकेशन, जैसे हमने रेप्लिकेशन के अंदर एक कॉपी क्रिएट कर देते हैं अपने रिसोर्स की, लाइव रेप्लिका तैयार होता है, जो भी टास्क आप परफॉर्म करेंगे सेकंड लोकेशन पे वो ऑटोमेटिक इमीडिएटली हाईलाइट हो जाएगा, विच इज अ रेप्लिकेशन। एज इट इज डिजास्टर रिकवरी का भी कॉन्सेप्ट होता है, बट इसमें गैप क्या होता है कि you can create another copy of your resource and put it into the different geographical location, ताकि in future कभी कोई प्रॉब्लम आती है बेस मशीन पे, बेस लोकेशन में, so you can revert your data from a different locations. तो ये सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इन केस ऑफ आवर बैकअप, रेप्लिकेशन एंड डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, Azure will provide us a n number types of backup. तो let's start from the Azure backup first, उसके बाद फिर उसी में एप्लीकेशन, उसी में डिजास्टर रिकवरी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। To create a backup over a Azure portal या फिर आप रेप्लिकेशन तैयार करना चाहते हैं, so in this case एक सर्विस है which is considered as a Azure Recovery Service Vault. Azure Recovery Service Vault. By using this particular service, we are able to take the backup of virtual machine. We can configure the backup for storage. We can take the backup of our DB, Azure database. On premises का बैकअप इससे कॉन्फ़िगर किया जाता है।
And we can also configure the backup for, you can say that, Azure Stack. A single recovery service vault can help us to take the backup of these resources. ऑन प्रेमाइसिस में कुछ भी बैकअप आप तैयार कर सकते हैं. Now, it will take the backup and put it into the backend of Azure. और आप कहीं कभी भी यहाँ से अपने बैकअप में से रिसोर्सेज को फिर से रिवर्ट करा सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट रिकवरी. Clear? Yeah. I'm going to help you how we can manage the backup and restore. So we have, I think, multiple storage services. यहाँ पे storage है which is available in East, US and Japan East as well. And let me see कि कोई virtual machine है अपने पास या नहीं. So we don't have a virtual machine. We will create. But before that, we just need to create a one recovery service vault. Recovery service vault is a part of storage. So just need to click here. Recovery service vaults पे click करेंगे. Already एक vaults create कर रखा है हमने training vaults के नाम से. Let me create one more. Training vaults 1988. Next, review and create. And you can choose any region or No, you must need to create your vaults in location of your resource. okay. ठीक है. अगर हमने वर्चुअल मशीन या फिर अपना स्टोरेज क्रिएट कर रखा है जापान ईस्ट में, तो हमारा रिकवरी सर्विस वॉल्ट भी उसी लोकेशन में होना चाहिए. And when we go to the storage standard type, that's an LSR and ZSR. Which LSR and ZSR, as per the name suggests, local redundant, और ये आपका geographic redundant means if you want to put your data in different geographical location, so GRS तो चाहिए उसमें. Yeah, if I'll go for the ZRS, then where we can make in the backup vault. No, we are able to take the backup, but we are unable to create and put it into different geographical location. Okay. बैकअप तो हो जाएगा, बट आप जिस लोकेशन में हैं उसी लोकेशन में रख पाएंगे डेटा. मीन्स डिजास्टर रिकवरी सपोर्ट नहीं करेगा. डिजास्टर रिकवरी के लिए आपको डिफरेंट लोकेशन चूज करना ही पड़ेगा, विच इज मैंडेटरी. क्योंकि डीआर का मतलब ये है कि यू वांट टू पुट आवर डेटा इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन. Once is ready to use, I am going to show you the step with the storage account. पहले हम storage account को का सिलेक्शन करके एक बार क्रिएट करते हैं हम अपने रिकवरी सर्विस वॉल्ट को. Just need to open it, training vaults 1988, and we are able to find a number of options. आप देखिए इस पैनल पे multiple options are available. All right. Just need to click on backup. दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, एक बैकअप है एंड दूसरा साइट रिकवरी. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बैकअप फर्स्ट, उसके बाद साइट रिकवरी की बात करेंगे. In other word, in another options we are able to find identity
नेटवर्किंग, प्रॉपर्टीज एंड लॉग, जो कॉमन ऑप्शन हर एक रिसोर्स में अवेलेबल रहता है, हर एक एज्यूर सर्विसेज में अवेलेबल रहता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द बैकअप. अंडर द बैकअप यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज वेयर इज योर वर्कलोड रनिंग, मीन कि मीन्स हमारा जो डेटा का लोकेशन है वो कुछ भी हो सकता है. इट मे बी ऑन प्रोमाइसेस, ठीक है, इट मे बी on premises, it may be Azure, it may be Azure Stack Hub, Azure Stack HCI और on premises. So ये चार अलग अलग ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, लाइक Azure है, Azure Stack Hub है, Azure Stack HCI है, और तीसरा HCI है, is और what? चौथा on premises. Sorry, HCI is what? HCI is basically correlated to a particular brand. Correlated to a particular brand in the sense कि कुछ ऐसे resources हैं जो Azure से connected हैं, ठीक है. Azure से connected in the sense uh, how we can describe about it. It's a third party or it's a part of Azure? It's a third party. Okay, fine. Because the Stack Hub is the part of Azure. Yeah, basically the device is basically designed using Azure services. HCI, let me explain you about the actual meaning of HCI. Abhi recently, not only the Azure, other services, no, other cloud provider ने भी जो हमारे पुराने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर इन द सेंस जो डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, टूल्स प्रोवाइड करते हैं, ये क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, उन सभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी या वेंडर से कोलैबोरेट कर रही हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर एज्योर सर्विस, ठीक है. Azure service or Azure portal, and we have another vendor like as a Dell EMC or VMware, ठीक है, just example. And you have much idea about Cisco, ठीक है. अब ये जो है ना, the HCI is basically hardware cloud infra, ठीक है, हार्डवेयर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. हार्डवेयर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि एक तरीके से पैकेज होता है, मींस इफ यू प्रोसीड विद दिल्ली एमसी, देन उस केस में आप अगर बैकअप लेना चाहते हैं तो इस दिल्ली एमसी के लिए एज्योर ने सेपरेट कॉर्नर बना रखा है कि अगर आपके पास दिल्ली एमसी है तो हम आपको सेपरेट और बेटर बैकअप सर्विस प्रोवाइड करेंगे. अगर आपने VMware परचेज किया और VMware हमारे इस HCI के प्रोडक्ट में आता है तो हम उसका जो बैकअप का ट्रीटमेंट है वो सेपरेट तरीके से करेंगे एज इट इज. इसको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल इन केस ऑफ HCI. Okay, ये that अपना will ऑन प्रोवाइड, provide an interface between the third party, just said Dell EMC and the cloud, यस Azure cloud. यस, दिस इज अवर ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्सेज. ये हमारे ऑन प्रोमाइसेस के रिसोर्सेज है, ये हमारा क्लाउड है, ठीक है. हमने अपने लोकल ऑफिस में डेल का सर्वर लगा रखा है. दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस डेल EMC. ये डेल सर्वर हो सकता है, मींस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द लोकल सिक्योरिटी, लोकल डेटाबेस. अब हमें इस डेल EMC का बैकअप लेना है तो रिकवरी सर्विस वॉल्ट कैन हेल्प अस. ये क्या करेगा, रिकवरी सर्विस वॉल्ट इसको सेपरेट तरीके से बैकअप में काउंट करेगा. ये हमारा ना ऑन प्रोमाइसेस पे आएगा, ये हमारा ना ऑन प्रोमाइसेस पे आएगा, ना हब में आएगा, ना एज्यूर में आएगा. इसके लिए सेपरेट. अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब आप देखिए यहाँ पे HCI के अंदर डू यू वांट टू टेक द फाइल फोल्डर, सिस्टम स्टेट, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट,
माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर या वर्चुअल मशीन, सॉरी एजर स्टैक हब, इस केस में भी आपको सेम ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बट गैप क्या है कि जो हार्डवेयर है ना वो हार्डवेयर आपके सपोर्टेड होने चाहिए। फाइन। एंड ऑन प्रोमाइसेस अगर बात करें तो ऑन प्रोमाइसेस में कुछ भी नहीं है। ऑन प्रोमाइसेस की केस में ये सारी सर्विसेज अगर आपकी लोकल में रन कर रही हैं, किसी भी हार्डवेयर पे रन कर रही हैं, ठीक है, वो आपका डेल का है, एचपी का है, नॉर्मल असेंबल्ड कंप्यूटर है, या फिर आपने कोई लैपटॉप पे स्टैब्लिश कर रखा है डेटा, तो कोई भी डेटा हो, बट आपको एक एजेंट इंस्टॉल करना है इन सभी के लिए, और उस एजेंट के थ्रू आप कोई भी सर्विस का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चाहे वो वीएम हो, फिजिकल मशीन हो, सिस्टम स्टेट बैकअप हो, एक्सचेंज सर्वर हो, कोई सा भी बैकअप हम तैयार कर सकते हैं। बट एक एक पार्ट को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग करेंगे एज्योर वर्कलोड से। अंडर द एज्योर वर्कलोड वी हैव ऑप्शन टू टेक द बैकअप ऑफ वर्चुअल मशीन, एज्योर का स्टोरेज में फाइल शेयर एंड एसक्यूएल सर्वर और एसएपी, इनमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। बट बिफोर दैट आई वांटेड टू क्रिएट द बैकअप फॉर आवर स्टोरेज। हम अपने स्टोरेज अकाउंट का बैकअप तैयार करना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन स्टोरेज अकाउंट जो ऑलरेडी बना है, उसमें हम फाइल शेयर वगैरह करके अपलोड कर देते हैं। जापान ईस्ट में एक स्टोरेज अकाउंट है, स्टोरेज 9887। ओपन स्टोरेज अकाउंट, सेलेक्ट फाइल शेयर। And is it possible, just say I have resource one and resource two. Resource one is located in East US and the resource two is located in India. So is it possible that I can make the backup of RS1 into RS2? No, sorry, can you please repeat again? I have two resource group. Okay. One is in East US, right? And one in RS2, that's in India. Two resource groups. So just say virtual machine is an RS1 and I want to take a backup of in RS2. Is it possible between two resource group? नो, बैकअप पॉसिबल नहीं है, रेप्लिकेशन पॉसिबल है। Okay. बैकअप आपको उसी लोकेशन के डेटा सेंटर में रखना पड़ेगा, बट वी टॉक अबाउट रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन ऑलवेज क्रॉस रीजन में किया जाता है। रेप्लिकेशन तो किसी भी जियोग्राफिक पे कर लो, रेप्लिकेशन तो I mean it's taken a snapshot and provide to the another. बैकअप का है, नहीं, बैकअप नहीं हो बैकअप सकता। उसी रिसोर्स ग्रुप में होना चाहिए। उसी रिसोर्स ग्रुप में, उसी लोकेशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन ही नहीं देखेगा बैकअप का। Okay, all right. ठीक है, सो लाइक इन आर केस अभी अपने पास इस नंबर ऑफ स्टोरेज है, लाइक एज स्टोरेज 1988 समथिंग व्हिच इज अवेलेबल इन ईस्ट यूएस लोकेशन, और एक स्टोरेज है CSG समथिंग करके, वो है आपका सेंट्रल इंडिया लोकेशन। एंड अब हम अगर यहाँ पे बैकअप पे जाएं और बैकअप के केस में एज्योर फाइल शेयर सेलेक्ट करें, सो तो आपको केवल ईस्ट यूएस लोकेशन का स्टोरेज ही दिखेगा, बाकी स्टोरेज नहीं दिखेंगे। एंड अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपका स्टोरेज अकाउंट ऑलरेडी किसी दूसरे रिकवरी सर्विस वॉल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, अगर Okay. आपका स्टोरेज अकाउंट ऑलरेडी किसी दूसरे सर्विस वॉल्ट से कनेक्टेड है, देन यू आर अनेबल टू फाइंड योर स्टोरेज अकाउंट इन एनी अदर रिकवरी सर्विस वॉल्ट। Okay. ठीक है, तो आई थिंक दिस स्टोरेज इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद अनदर रिकवरी सर्विस वॉल्ट, दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू फाइंड इट। So what I'm going to do, I'm going to create one more storage account.
That means you can take, you can make only one backup for an. Yes, we can connect with only one recovery service vault at a time. Okay. Now, I'm just going to put something in our storage account, testing storage 1988, and just need to click file share, create file share. Upload few files from on-premises to file share. कोई सा भी data, like I'm just going to upload these 4 different files. Done. ठीक है, so these are the files which is available in our testing storage 1988. Back to the recovery service vault, refresh the page and select backup again. Okay. Click select. It will maybe take time. Japan East में होना चाहिए दोनों. अभी यहाँ पे कोई भी स्टोरेज अकाउंट नहीं दिख रहा है. Let me refresh the entire page. Now we are able to find one storage account जो अभी recently हमने storage account create किया. We are able to find testing storage 1988. Just need to click here and select OK. ये entire storage account है, but we want to take the backup of our selected file share. तो अभी still is in progress. Wait for few seconds. Approval में थोड़ा सा time लगेगा, and जैसे ये हमारा storage account available हो जाता है, we will proceed for the next step.
Done. We selected our testing storage. I'm just going to select our file share. यहाँ पे add के option पे click करेंगे and we just need to select the file share data Mhm. and click OK. We have two different option here, like as आप edit policy करके policy assign कर सकते हैं. The meaning of policy is basically related to the scheduling. ठीक है, is related to the scheduling. And is it possible, just say I have an application is storing the data. So is Okay. it possible to have the selected data in the application files? Application data या फिर entire application? Entire application तो normally that will take a backup of the whole machine. मेरे को चाहिए कि वो मतलब एप्लीकेशन तो मैं कहीं जैसे स्टोरेज कर दिया, एक अलग फाइल बना दिया. डेटाबेस का है कि जो पर्टिकुलर डेटा है, जैसे जैसे दैट्स एन 4 tables is there. So is it possible I can take this 2 table database every day? Just a customer is coming on the site. अच्छा, ठीक है, we can, but in this case we need to select SQL database, not here, because this one is for unstructured data na. Okay, that's unstructured, right? This one is our unstructured data और उस केस में भी उस केस में हमारा SQL database आएगा. Yeah, that's, oh, मैं ध्यान नहीं रहा था ये, sorry. Okay, so now this is the scheduling part. जब आप इस पे क्लिक करेंगे, it give you both options. Daily backup, even hourly backup is also available. Means अब 1 hour कम लगा सकते हैं, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, as per the requirement कि we wanted to take the backup of entire file share या फिर जो भी हमारे पास unstructured या structured data है, उनका backup हर 2 घंटे में या 6 घंटे में create हो जाए. So we can do that. We want to check it the backup services right now. So इस केस में हम backup now का procedure use करेंगे. It give us a number of option like retention. So आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि बैकअप का रिटेंशन टाइम कितना होना चाहिए. 7 days से लेकर 30 days तक के लिए हम यहाँ पे अप्लीकेबल कर सकते हैं. करेक्ट. Okay. सो इट्स फुली बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट. ये हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. ना सो अभी के लिए जो भी ऑप्शन है, आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट बैकअप नाउ. बैकअप बिकॉज हमें बैकअप इमीडिएट तैयार करना है, वैसे ओवरली बेसिस पे लगा है, बट वी वांटेड टू क्रिएट बैकअप राइट नाउ. सो वंस वी proceed for deployment, it will give us option to create backup right now. Backup proceeded successfully. What we need to do, we just need to open, and उतनी ज़्यादा कैपेसिटी है नहीं बैकअप की, so we just need to click on backup items. It will guide you, it will guide us कि हमने कौन कौन सी सर्विस का बैकअप कॉन्फ़िगर कर रखा है. ठीक है. So
वी आर एबल टू फाइंड कि अभी हमने एक बैकअप प्रोसीड किया है विच इज एज्योर स्टोरेज, और एज्योर स्टोरेज के अंदर हमने फाइल शेयर बैकअप कॉन्फ़िगर कर रखा है, करेक्ट? जस्ट नीड टू क्लिक हियर Yeah, shared एंड data. वार्निंग इन द सेंस, क्योंकि ये स्केड्यूलिंग में है। स्केड्यूलिंग के केस में जो वो टाइम बेसिकली जिस टाइम पे सेटअप होगा उस टाइम पे ऑटोमेटिक बैकअप तैयार हो जाएगा, बट वी वांटेड टू चेक इट राइट नाउ। सो थ्री डॉट पे क्लिक करो, यहाँ पे बैकअप नाउ का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, Okay. क्लिक हियर and this is the actual time, click OK, triggered. So it's done. Is process, wait, just need to refresh it, succeeded. Yeah, that's ठीक है? done. We successfully completed the backup. अब एक बार स्टोरेज में जाकर के ये सभी डेटा हम डिलीट कर देते हैं। I'm just going to remove all the data. यहाँ पे कोई भी रिसाइकल बिन नहीं है तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। जब आप अपनी तरफ से डिलीट करेंगे तो now we successfully removed all the data इस शेयर फोल्डर के अंदर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है because we deleted all the data. And the next one will be available after 30 minutes. हाँ, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर करा सकते हैं। We just need to open view details पे जाकर के and it will give us option of both restore file and Oh, restore share and restore recovery, restore file recovery. So may I know the difference between each other? uh, so share. I think that the file share data will be restored, and another is file recovery. I think The actual gap both are the between each same. other. It's almost seems to be the same thing. ओके सो यस बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, बट थोड़ा सा गैप ये है कि जब आप फाइल रिकवरी पे जाते हैं ना, इट विल गिव अस ऑप्शन टू चूज द फाइल दैट यू वांट टू रिकवर, Okay, right. बिकॉज And इन the सम share, केसेस, या क्या कह रहे हो? okay, in file recovery, it will ask you which file do you want to recover, यस करेक्ट। and the restore share, the whole data will be. हाँ, Okay. ठीक है। इन दिस केस इट विल प्रोसीड फॉर ऑल द डेटा, जितने भी स्टोरेज के अंदर डेटा रहेंगे फाइल स्टोरेज के अंदर, वो सभी मींस बैकअप करना है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फाइल रिकवरी यानी आप सेलेक्टेड डेटा को रिकवर करना चाहते हैं तो सेकंड वाला। ठीक है. Can we check these things? श्योर। सो फाइल रिकवरी पे क्लिक करते हैं। इफ वी प्रोसीड विद फाइल रिकवरी इट विल रीडायरेक्ट यू, एंड दिस इज द ऑप्शन ऑफ आवर स्टोरेज पॉइंट। तो एक ही स्टोरेज पॉइंट अभी क्रिएट किया है जस्ट थोड़ी देर पहले, तो जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट द सेम वन। इट गिव अस टू डिफरेंट ऑप्शन। द फर्स्ट इज original location and another is alternate location, correct?
ऐड फाइल्स पे जाएंगे तो इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ इंटायर फाइल्स जिनका भी बैकअप कॉन्फ़िगर किया गया है। तो यहाँ पे आपके पास रेडियो बटन की जगह पे सेलेक्टेड बटन है, राइट? व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू टेक द बैकअप, ठीक है? आप इसमें से कौन सा बैकअप क्रिएट करना चाहते हैं? You can select view files. यस, जो भी बैकअप हमें कॉन्फ़िगर करना है उस जो भी जिस भी फाइल का को रिस्टोर कराना है, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट एंड रिस्टोर। All ये right. गैप होता है बेसिकली, लाइक आई वांटेड टू टेक द बैकअप रिकवरी ऑफ टू डिफरेंट फाइल्स ओनली, तो हम दो सेलेक्ट करेंगे बस, सिंपल सा, ठीक है? Okay. एंड जब आप फाइल शेयर में जाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास पूरा का पूरा डेटा आता है, उसमें कोई सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट एंड क्लिक रिस्टोर। अगर हम रिस्टोर करते हैं तो जितनी भी फाइल्स है ना वो ओरिजिनल लोकेशन में जाएंगी। इफ यू वांट टू प्रोसीड एंड पुट इट इनटू द डिफरेंट स्टोरेज अकाउंट, तो आपको दूसरे स्टोरेज अकाउंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। Okay. You must need to provide the information about your different storage account, या फिर आपके पास ऑलरेडी फाइल है, कुछ फाइलें आपको स्किप करनी है, तो you can Mhm. do that. Clear? Okay. So I wanted to proceed with the original location and click restore. Manzi, today I'm facing a problem in my account. Azure account? I'm facing a problem in my account. I open a new account. The previous one was, that's when the time was over 1 month. So I made a new account today. Yeah, day before yesterday. Then I was trying to make I want to connect with the Terraform. So I made it, that's a new user and the connected with the scripture. उसके बाद पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई, सब्सक्रिप्शन इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग। You should check the quota of your subscription. आपने क्या करना है ना, आपने क्या करना है, let me show you. Can we close the recording? So I've given a sharing of myself. Yeah, sure. So just give me a minute. यहाँ पे हम डेटा देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके। Okay. So all the data is restored successfully. ठीक है? Mhm. Okay, let me make you